Okay, so today myself Apurupa Guho, today I have to discuss on Enolate Chemistry. Okay, because Enolate Chemistry is very much important in point of view all the entrance exam, that is CSI and GATE also, and I solved the most important examples from Carothor's book, that is which is very standard book, and most of the question in the CSI and also GATE, that should become from the all the standard book like Carothor's, Claydon. Okay, so I solve all of this, and don't worry about the all the how the question approaches can be there. I will discuss all of this. Okay, so आज जो हम क्या सिखा रहे हैं, इनोलेट केमिस्ट्री. इनोलेट ऑलरेडी मैंने एक इनोलेट केमिस्ट्री का एक लेक्चर तो अपलोड कर दिया. वहाँ पर क्या बोला, क्या इन मतलब डबल बॉन्ड होता है, और इनोलेट वो एक्चुअली मतलब क्या होता है. इनोलेट आया है इनोल से, जहाँ पर इन मतलब डबल बॉन्ड, ऑल मीन्स OH, अल्कोहलिक OH. ओके, बट this double bond and OH, they are conjugate to each other. Okay, that is called enol. And वो enol का जब OH का हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा. On that case you have to say enolate. Okay, so now we have to start. Okay, so already I discussed about extended conjugation of via CN. ओके, CN में कैसा आपका एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होता है. ओके, अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, आप प्रीवियस लेक्चर में जाओगे, उसके बाद आप देखोगे, मैं प्ले लिस्ट कर दूंगा कि ये सब इनोलेट केमिस्ट्री में आता है. सो यू कैन विजिट एंड यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड. ओके, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तो ऑन दैट केस यू कैन राइट योर all the detailed problem in the comment section. I will discuss it. Okay, so now already previous lecture में मैंने क्या किया, extend conjugation with CN. okay, कैसे आपका किया, right, double bond C triple bond N CO2 ET. okay, then NaOET, ethanol. okay, so first of all there must be this there must be the acidic proton that should be abstracted. okay, N, and there must be CO2 ET. okay, this negative charge goes this way and this negative charge this way, then again extending. This is called as extended conjugation. This is called as extended conjugation. okay, and then again what should be happen, this negative charge goes this way, this negative charge goes this way, and that should be react. okay, so this is I will discuss in the previous lecture. okay, so today I have to discuss on again some more examples. okay, now first one, CH CO2 ET. okay, there must be also another H. okay, now फर्स्ट वन प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन. ओके, फर्स्ट स्टेप कोई भी बेस आप दे दो, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन होगा. विदाउट प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन मोस्ट ऑफ द केसेस द रिएक्शन इज नॉट सो फेवरेबल, बिकॉज इनोल में भी आपका टोटोमराइजेशन होता है, इनोल से भी आपका अटैक होता है, पर इनोलेट जब हो जाता है तो ज़्यादा प्रेफर करता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज हो तो वो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा क्या होता है, न्यूट्रलाइज होने का कोशिश करता है, इसलिए वो रिएक्शन में ज़्यादा प्रोसेस करने का हेल्प करता है. और इनोल जो होता है वो तो एक्चुअली न्यूट्रल स्पीसीज है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन का लोन पेयर, देखो एक ऑक्सीजन का लोन पेयर होता है और एक ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज होता है. ऑब्वियसली द ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज जब हो, उसका अट्रैक्ट करना, उसका रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने का
टेंडेंसी ज़्यादा होता है. ओके, बिकॉज ऑक्सीजन हैविंग द लोन पेयर इज स्टिल ए न्यूट्रल स्पीसीज एंड ऑक्सीजन हैविंग ए नेगेटिव चार्ज, this is not a neutral species. And always remember, if you compare in neutral species and non-neutral species, non-neutral species, that is negative charge, positive charge in the compound, always favor the reaction more. Okay, ठीक है. अगर आपका O नेगेटिव हो और OH हो, ठीक है, तो O नेगेटिव ऑलवेज प्रेफर टू प्रोसीड रिएक्शन मोर. ओके, बिकॉज ए ड्राइविंग फोर्स है. सोचो, एज फॉर एग्जाम्पल, योर कंडीशन इज oil good, you can happily carry your life with your money. Okay, so there must be no driving force is there. Okay, but suppose, as for example, there must be very high amount of rupees you needed for some health issue, for some marriage issue. Okay, so on that case, this is a driving force to work harder to get the extra money. Okay, so that makes an additional driving force. Okay, so this additional driving force is negative charge or positive charge, which help to proceed in the reaction. Okay, एक होता है ना आपका, जैसे आपका कोई भी एग्जाम हो तो आप ऐसे एग्जाम दे रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड अ ड्राइविंग फोर्स, नॉर्मल ड्राइविंग फोर्स. यू कैन कैरी ओवर द रिएक्शन in a usual way. Okay, but suppose, as for example, some people insult you. Okay, and that make a very much insulted feeling to you. So on that case, you get the additional driving force. So I have to do this. So that is the more reaction faster, like O negative and O positive, O negative or any other positive species make a more favor on the reaction. Okay, then the neutral species. Okay, so first one, base abstract the proton, this, and there must be negative charge can be produced. Okay, negative charge and CO2 80. Okay, then again Rx, this negative charge R attack X, that should be eliminated. Okay, so what should be produced? RCH CO ET whole twice. Okay, right. अब देखो, यहाँ पर दो टाइप का रिएक्शन हो सकता है. एक हो सकता है आपका NaOH दे दो, ठीक है, तो क्या होगा? NaOH क्या करेगा? आपका जो COOET इसको COOH में कन्वर्ट कर देगा. NaOH एंड H3O प्लस. ओके, करेगा, मतलब RCH ऐसी है, उसके बाद COOH एंड COOH. ओके, RCH, COOH and COOH. So these two COOH are adjacent to each other. That is called, what is geminal or vicinal? I think geminal. Geminal to carboxylic acid are not good. Okay, always tendency to one CO2 that should be eliminated. आप एक हीट दे दो तो एक CO2 बाहर आ जाएगा. Okay, one CO2 that should be eliminated. Okay, so what should be produced? RCH to COOH. This is the product, RCH to COOH. Okay, अगर आप रिएक्शन का कंडीशन चेंज कर दो, जैसे आपका लिथियम क्लोराइड and DMF. DMF is a non-hydroxyphilic solvent. So what should be the difference? There must be no hydrolysis of CO280. आपका CO280 का कोई हाइड्रोलाइसिस नहीं होगा. एक CO280 का होगा, दूसरा का होगा, दूसरा का नहीं होगा. मैं फिर से गलती बोला, ठीक है, I said wrong. अगर lithium chloride and DMF that should be used, on that case, one CO280 that should be hydrolyzed and convert into COOH, and other CO280 that should be still present as it is. Okay, एक पहले वाला क्या था, जब H3O प्लस आप यूज़ किया, दोनों CO280 कैसे कन्वर्ट किया? दो COOH में, ठीक है. पर जब आपका नॉन हाइड्रोक्सिफिलिक सॉल्वेंट जैसे DMF आप यूज़ करोगे, जहाँ पर कोई भी प्रोटॉन नहीं है, कोई भी हाइड्रोलाइसिस होने का चांस नहीं है, ऑन दैट केस, ऑन दैट पर्पस, आपका दो CO280 का एक CO280 हाइड्रोलाइज होकर एसिड हो जाएगा, दूसरा CO280 जैसे रहना है वैसे रहेगा. ओके, तो लाइक RCH and that is COOH
एंड COOET। ओके, अगर आप फिर से हीट दो तो ACOOH बाहर आ जाएगा। क्यों? वाई? दो जेमिनल COOH तो नहीं है। Two COOH are not adjacent to each other. There must be one COOH, other COOET. Why that is so? Because there must be two reasons. You never see any compound where one COOH and one COOET that should be attached with it. एक तो बात है, आप कहीं पर भी कहाँ भी आप नहीं देखोगे कि कोई कंपाउंड में एक कार्बन के साथ एक COOH और एक COOET जुड़ा हुआ है। That is never be you see. Okay, so that means this is not stable. Okay, एक COOH एक हैंड में और दूसरा हैंड में COOET लेकर एक कार्बन खड़ा हुआ है, दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दिस इज नॉट स्टेबल। ओके, एंड नेक्स्ट वन, जब डिकार्बोक्सिलेशन होगा तब क्या होगा? तब एक कार्बन आयन होगा। ऑन दैट केस ए कार्बन आयन दैट शुड बी प्रोड्यूस एंड दिस कार्बन आयन विल बी स्टेबल एनफ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नियरेस्ट COOET। वो जो कार्बन आयन प्रोड्यूस होगा वो नियरेस्ट COOET की वजह से स्टेबल होगा। ओके, ऑन दैट केस you have to get, that is RCH negative COOET. Okay, why this is stable? Because this is stable because this carbon ion can be resonance stabilized. Okay, and also this group is electron withdrawing group, and electron withdrawing group stable the carbon ion. Okay, ultimately what should be produced? RCH2 COOET. Okay, CH2 COOET can be produced. Okay, clear? You can take in screenshot. Okay, I take. Okay, next. Next one. Sorry. Okay. CO2. Okay. Right? Lithium in isopropyl whole twice. That is called LDA. You can use, and along with some medium can be used, THF. THF is a solvent, and minus 78 degrees centigrade. Okay, so what should be produced? There must be this acidic proton can be released. Okay, यहाँ से ही होगा, यहाँ से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ से अगर हो तो वहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट होने का पॉसिबिलिटी नहीं होगा, स्टेबल होने का पॉसिबिलिटी नहीं होगा। ठीक है, याद रखना। आपका यहाँ पर हुआ है उसकी वजह से आपका क्या होगा? कोई भी प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी होगा। आप जब रिएक्शन प्रोसीड करोगे ना, सिर्फ आप स्टेबिलाइजेशन मत देखो, आप ये भी देखो कि रिएक्शन कैसे प्रोसीड हो सकता है। आपका जब साइक्लिजेशन होगा तब आप ये देखना है, हाँ एक साइकिल हो सकता है वहाँ पर, तो ऑन दैट पर्पस, ऑन दैट केस वहाँ पर एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन हो सकता है, वो भी कभी कभी होता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, on that case this beer. Okay, so that should be pushed this way, that should be this way, and beer that should be released. Okay, एक beer बाहर आ गया। ठीक है, डबल बॉन्ड। Okay, okay, next again LDA. Okay, what should be produced? यहाँ पर एसिडिक प्रोटॉन है, राइट? CO2 में। ओके,
ETB है, bond Br, that should be released. So what should be produced? This CO2 Me. Okay, that should be produced. इसको हम कैसे लिख सकते हैं? Okay, okay, CO2 Me. Right, so this is the product. Okay, clear? Okay, next देख लो एक बार. Okay, next one. Now we have to most follow, that is alkylation. Alkylation very much important. आपका इनोलेट केमिस्ट्री में alkylation बहुत important होता है. आज ज़्यादातर क्वेश्चन आता है किससे आप बोलो तो दिस साइक्लोहेक्सानोन. साइक्लोहेक्सानोन से क्वेश्चन आता है. Most of the cases the question that should be come from cyclohexanone. Okay, LDA or LHMDS. Okay, what should we produce? This negative. Okay, this negative charge this way and this is this way. What should we produce? Okay, the bond O negative MNX. Okay, and then this negative charge goes this way and that should be react to this Me and that should be I, that should be released. So what should we produce? This is the product. Okay, the alkylation of symmetrical ketone or ketone that can enolize in one direction only can, and however two defined monoalkylated product can be produced. By the way, two structure isomeric enolate anion can be produced. How? I say that. लिखो, ठीक है. ओके, क्लियर? आप इससे ए भी प्रोड्यूस कर सकते थे क्योंकि सिमेट्रिकल है, आप ए भी होगा. ठीक है, this that also be made. Okay, ये भी प्रोड्यूस हो सकता है. Okay, clear? Okay, next. Alkylation of symmetrical ketones or of ketones that can enolize in one direction. ओके, सिमेट्रिकल हो तो जो कोई भी एक डायरेक्शन में आपका इनोलाइजेशन मतलब हाइड्रोजन एब्स्ट्रक्शन होगा. ओके, ठीक है. ओनली कैन इनोलाइज इन वन डायरेक्शन. Okay, sorry. However, two different monoalkylated products
may be formed by way of structurally isomeric enolate anions. ओके, तो एल्काइलेशन ऑफ सिमेट्रिकल कीटोन्स और ऑफ कीटोन, कोई सिमेट्रिकल एल्काइलेशन ऑफ सिमेट्रिकल कीटोन भी हो सकता है, और ऑफ कीटोन बोला मतलब आपका और कोई कीटोन होता है, जो भी हो आपका इनोलाइजेशन कोई एक डायरेक्शन में होगा। ओके, और अगर वो सिमेट्रिकल हो तो आपका स्ट्रक्चर 2 आइसोमेरिक इनोलेट एनायन होगा, क्योंकि दोनों का पॉसिबिलिटी सेम होता है। ठीक है, पर अगर आपका अनसिमेट्रिकल कीटोन हो तो क्या होगा, तो कोई एक ज़्यादा स्टेबल होगा, कोई एक कम स्टेबल होगा, कोई एक मेजर होगा, कोई एक माइनर होगा। दैट मीन्स द रिएक्शन शुड बी स्टीरियोसिलेक्टिव, नॉट स्टीरियोपेसिफिक, स्टीरियोसिलेक्टिव। आपका इनोलेट केमिस्ट्री में 2 प्रोडक्ट ही प्रोड्यूस होता है, पर क्या होता है आपका सिमेट्रिक हो तो आपका 2 आइसोमेरिक पेयर होगा। अगर आपका नॉन सिमेट्रिकल कीटोन हो तो ऑन दैट केस एक मेजर एक माइनर होगा। ठीक है, if one of the isomeric enolate anion is stabilized by conjugation with another group like CnNO2, okay, or other carbonyl compound, etc. Okay, so on that case one product major, this product major, other should be minor, other will be minor. ओके, जो स्टेबलाइज होगा वो मेजर होगा, जो स्टेबलाइज नहीं हो पाएगा वो होगा माइनर। ओके, क्लियर? ओके, नेक्स्ट। ओके, now next one, there must be pH. okay, double bond this. okay, KOH butyl 4NBr. okay, so what should we produce? That is pH this here negative charge. okay, pH there must be negative charge. 2 type of product can be produced. okay, तो ऑब्वियसली दिस शुड बी मेजर वन, क्योंकि आपका नेगेटिव चार्ज आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन हो सकता है, यहाँ पर भी कॉन्जुगेशन हो सकता है। ओके, 2 कॉन्जुगेशन हो सकता है दिस। ओके, सो देयर मस्ट बी MEI कैन बी देयर एंड दिस कैन बी रिएक्ट दिस वे, I कैन बी रिलीज। सो व्हाट शुड बी प्रोड्यूस? pH Me double bond to this. Now there again MEI, I release,
So pH, double bond O, that should be produced. Okay, clear? Okay, next. Okay, now CO2 MEM. Okay, again CO2 MEM. Okay, again use LTA and also tetrahydrofuran as a solvent, inert solvent. Okay, that should be behave like inert solvent. Okay, so what should we produce? CO2 MEM. Okay, again negative this CO2 MEM. Okay, again PHCH2 and also Cl. That should be react this way, and Cl that should be released. Okay, so what should be produced? That is a pH, CO2 MEM, this that should be produced. Okay, तो ऐसे आपका यहाँ पर एक CO2 MEO होगा, ठीक है, तो ऐसे आपका एक कंपाउंड होता है. Okay, clear? Next we proceed. Okay, next. Okay, so alkylation of unsymmetrical ketone bearing alpha alkyl substituent generally leads to mixture of containing both alkylated product, but slow addition of the ketone and strong base kinetically control product can be produced. Equilibration does not occur. Okay, एक देखो, एक पॉइंट लिख लो जो स्लो एडिशन होता है. स्लो एडिशन, सपोज आप तो देखो, ये तो मैंने थ्योरेटिकली किया, ठीक है, तो आप तो जब रिएक्शन में करोगे दिस इज शुड बी इन practically. Okay, so when you practically mix this, you can either add the ketone with your rapid manner, or you can add the ketone in slow addition. Okay, both type you can add. Okay, आप ऐसे भी कर सकते हो, जल्दी जल्दी सब कीटोन डाल दिया, होता है ना. और कोई ऐसा हो, कोई स्लोली बूंद बूंद करके कीटोन ऐड कर रहा है, तो दैट कैन ऑल्सो भी हैपन. तो उसके वजह से आपका प्रोडक्ट का वेरिएशन हो सकता है. देखो, एक होता है आपका थ्योरेटिकली, एक आप प्रेडिक्ट कर सकते हो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट होगा. प्रैक्टिकली हर वक्त थ्योरेटिकली जो होता है प्रैक्टिकली वो हर वक्त नहीं होता है. वाई? बिकॉज देयर मस्ट बी सो मेनी फैक्टर्स आर देयर. आपको बोला गया है दैट इज देयर मस्ट बी इंस्ट्रक्टेड इज देयर दैट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड यू हैव टू डू द रिएक्शन. ओके, पर यू what you done, you make a 100 degree centigrade, that's okay, but there must be some vessel is there. Okay, there must be some vessel is there, container is there, vessel is there, and then there must be the sample is there. So obviously some temperature can be absorbed by the vessel. Okay, so this can be happen. You get, that is the instruction, that is this product will be produced. Okay, but somehow some sample are unreacted, and that should be mixed up in the reaction. So these unreacted sample also interpret in the NMR data. Okay, so that's why you have to need the purification. In purification, so many product that should be wasted. Okay, क्योंकि आप जब सेपरेशन करोगे आपका बाई प्रोडक्ट या वेस्टेड प्रोडक्ट के साथ आपका डिज़ायर प्रोडक्ट भी कुछ कुछ चला जाएगा. ठीक है, तो आपका जितना अमाउंट होने का इंस्ट्रक्शन हुआ है उतना अमाउंट प्रोड्यूस नहीं होगा. आपका 2 मिलीमोलर होने का बोला था, आपका वहाँ पर 1 मिलीमोल अनरिएक्टेड हो गया. ठीक है, 2 millimole product that should be produced from your reaction, suppose, but there must be already 1 millimole sample that should be unreacted. Okay, so this 1 millimole that should be goes in the wastage, right? So again there must be 1 millimole product can be there. Okay, but due to separation, due to purification, and due to work up procedure, there must be so many procedure can be go in the purification process. You get 0.5 millimole product. So what should be the inference? That is, the inference is the theoretical result and practical result, there must be huge difference.
Okay, because in theory there must be only the mechanism important, only the condition important, and that is theoretically predicted that this can be produced. But in practical there must be room temperature, either temperature, that season is also crucial sometimes, winter season, summer season, and also there must be the your hand, how your hand can be perform in the reaction. कुछ कुछ लोगों का हैंड बहुत अच्छा होता है, हैंड मतलब वैसा हैंड नहीं, हैंड मतलब उसका जो हैंडलिंग का टेक्निक वो अच्छा होता है, कुछ कुछ इंसान का हैंडलिंग टेक्निक अच्छा नहीं होता है, तो उसके वजह से भी हो सकता है. वर्किंग प्रोसीड्योर ऐसा हो सकता है, आपका जो वर्कअप आप प्रोसीड्योर कर रहे हो सेपरेशन के लिए वो अच्छा नहीं है, वहाँ से बहुत प्रोडक्ट चला जा रहा है. ठीक है. Purification procedure, that is also very important. And last one, some sample that can be lost due to detection in NMR and some other method. जो भी हो आपका NMR में तो फिर से भी वो जो सैम्पल आप देते हो NMR के लिए वो फिर से आप पा सकते हो. ओके, बट मास स्पेक्ट्रोमेट्री में अगर आप दे दो तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री में से आप फिर से वो सैम्पल पहले जैसे नहीं पाओगे. ओके, तो दैट ऑल्सो बी डिफर. ओके, क्लियर. Okay, so slow addition of the ketone plus strong base, okay, ultimately produce what? Kinetically controlled product. Okay, kinetically controlled product, and there must be no equation. Equation does not occur. इक्वेशन नहीं होता है ऑन दैट केस. ओके, क्लियर. ओके, तो स्लो एडिशन ऑफ कीटोन प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, देयर मस्ट बी काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट कैन बी प्रोड्यूस एंड इक्वेशन डज नॉट ऑकर ऑन दैट केस. ओके, नेक्स्ट. If the enolate is prepared by slow addition of the base to the ketone, or if an excess of the ketone remains after the addition of base to the ketone, okay, to the ketone, or if an excess of the ketone तो बोला है, excess of the ketone remains after the addition of base. Okay, to the कहाँ थे हम, addition of base to the ketone, or if an excess of the ketone remains after the addition of base is complete. Okay, the equilibrium mixture of enolate anions are obtained. Okay, containing
predominantly the more substituted enolate. Okay. So if the enolate is prepared by slow addition of the base to the ketone, एक तो बोला slow addition of ketone, but slow addition जब ketone होगा तब equation नहीं होगा, ठीक है. पर slow addition of base अगर हो, on that case what should be there? Suppose there must be slow addition of base to the ketone, or if excess of ketone that should be remain, or after all the base that should be added, there must be still some ketone at present. What should be the product? The equilibrium mixture of enolate anions that should be obtained. एक आपका स्लो एडिशन ऑफ कीटोन जब होता है वहाँ पर कोई भी इक्विलिब्रियम मिक्सचर नहीं होता है, इक्विलिब्रेशन नहीं होता है. काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट ही आपका प्रोडक्ट होता है ज़्यादातर केस में, ठीक है. वही मेजर हो जाता है, वही प्रोडक्ट होता है. एक्चुअली मेजर भी नहीं होता, वही प्रोडक्ट हो जाता है ज़्यादातर केस में. पर अगर आपका ऐसा हो, आपका एक्सपेरिमेंटल ऐसा हो, आपका बेस आप स्लो एडिशन किया है और आपका बेस एडिशन करने के बाद भी आपका कीटोन रह गए हैं और आपका कीटोन एक्सेस है, ऑन दैट पर्पस यू गेट द इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ द टू टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, टू टाइप ऑफ इनोलेट एनाइड्स. ओके. एंड कॉन्टेंटली देयर मस्ट वॉश what should be the major product? The major product should be more substituted product. Okay. दो इक्विलिब्रियम मिक्सचर का तो दो प्रोडक्ट होगा, दो इनोलेट होगा, राइट. पर वहाँ पर दो इनोलेट एनाइन होगा, पर वहाँ पर जो मेजर सब्स्टिट्यूटेड होगा वो होगा मेजर प्रोडक्ट. ओके, वो होगा मेजर प्रोडक्ट. ओके. Okay, clear? You can take screenshot or you can pause the video and write all the things. Okay. Okay, thank you. So, first one example, there must be double bond O and that is not a symmetrical, that is a unsymmetrical. अगर आपका ऐसा हो कि प्रॉब्लम हो जो सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल में, आप एक प्लेन ऑफ सिमेट्री डाल देना, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री डाल देना. ओके. यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई भी मिथाइल ग्रुप नहीं है, यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप है, मतलब दो साइड एक जैसा नहीं है, मतलब दिस इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल कीटोन. ओके. You can use the plane of symmetry in middle of the ketone. In one side there must be no methyl group is present, in other side there must be one methyl group is present. So that means there must be one side no methyl group, other side one methyl group. So obviously the ketone is unsymmetrical one. Okay. Okay. Methyl. Okay. So there must be so many reagents are there. First one, LDA, DME, okay, minus 78 degrees centigrade. There must be kinetically controlled product can be produced. What should be product? This O negative, methyl, and H2 O negative, this methyl. Okay, so when आपका temperature is low, always remember when the temperature is low, that should be follow most of the cases kinetically controlled product, and kinetically controlled product should be less substituted. Okay, kinetically controlled product that should be less substituted. Okay, 99 and that is 1. Okay, clear? आप याद रखना, that is low temperature, that should be goes to kinetically controlled product, and kinetically controlled product mostly goes to least substituted product. Okay, least substituted product. और हाई टेम्परेचर जब भी होगा, हाई टेम्परेचर ऑन दैट केस थर्मोनली कंट्रोल प्रोडक्ट होगा, और तब क्या होगा, मोस्ट substituted product can be produced. Low temperature kinetically controlled product and least substituted, and high temperature thermodynamic controlled product and most substituted. There must be minus 78 degrees centigrade along with LD and DME. Okay, when the inorganic base can be used, most of the cases that is goes to kinetically controlled product. Okay, clear? On that case, most of the cases kinetically controlled product can be produced. Okay. Okay. Next one.
this Ame. sorry very much sorry. Again we can use C lithium, that is a organic base. This is organic base, so that is what should be produced? Thermodynamically controlled product. Okay, DME and minus, but there must be minus 78 degrees centigrade, so that's why kinetically controlled product is produced. And remember that when the temperature is specified, that should be more favored, the temperature should be more favored than the base. Okay, आपका बेस तो thermodynamic control product ही देगा, but when you get the temperature is very low, on that case the temperature should be more predominant than the nature of base. Okay, and what should be the product? This O negative and methyl ओके तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा? यहाँ पर 9 होगा, इस टू 91 होगा. ओके, एक हो गया. दूसरा क्या ले PH3C लिथियम. ओके, यहाँ पर कोई भी टेम्परेचर नहीं दिया. क्या दिया? रूम टेम्परेचर. सोचो टू रूम टेम्परेचर दिया और कोई भी टेम्परेचर ही मेंशन नहीं किया. सो ऑर्गेनिक बेस ऑलवेज बी thermodynamically controlled product. Okay, so the thermodynamic control means more substituted. Okay, so more substituted means that is a 90 and that should be 10. That should be measured. Okay, more substituted product should be thermodynamic control product. Again, potassium tert-butoxide. Okay, and tert-butanol. Okay, there must be inorganic base, but still due to steric hindrance, that is also give thermodynamically controlled product. That is must be 93, that is must be 7. Okay, so this is the so much summary. Okay, clear? Okay, next you can take the screenshot and then I post it. Okay, okay. Again, okay, and product. O negative. Okay, now when LDA use, LDA that is organic base means, but thermodynamic control, but LDA के साथ क्या है? THF है as a solvent having no effect, but minus 78 degree है. मैंने क्या बोला? Temperature most prefer. So you have to first see the temperature. So obviously kinetically controlled product is there. Kinetically controlled means least substituted. Okay, least sum means least substituted. That means this is 100 and that should be 0. So that is a stereopacific reaction because A is हो रहा है, A तो प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है. तो मतलब जो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, एक प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है और दूसरा प्रोडक्ट ही 100% प्रोड्यूस हो रहा है. मतलब क्या होता है? वो स्टीरियो सिलेक्टिव नहीं है, वो अब स्टीरियोपेसिफिक है because only one product that should be produced. Okay, and next one, PHCC lithium and DME, that is also inert solvent, but here no temperature is there and there must be organic जो होता है वो ज़्यादातर क्या हो देता है? बोलो. वो ऑर्गेनिक जो होता है वो थर्मोडायनामिक कंट्रोल ही प्रोडक्ट देता है. यहाँ पर बेस ही इंट्रोड्यूस होगा क्योंकि यहाँ पर कोई टेम्परेचर फैक्टर तो दिया हुआ है नहीं है.
not a given. Temperature factor is not given. So temperature not given, so there must be no clue is there from the temperature. But base is there. That is, base is which type of base? Organic base. And always remember, organic base prefer thermodynamically controlled product. That means more substituted product. Okay, so organic base always prefer thermodynamically controlled product. That means more substituted product. Okay, so that's why this should be 87 and that should be 1, 3. And that is must be stereo selective reaction. Stereo selective, because one major, one minor. And that should be stereo specific. Specific, because not a one major, not a one minor, one product, that should be 100%. Okay, next. Next and last reaction I will prefer. And before going in detail, एक बात याद रखना, अगर आपका बेस ऑर्गेनिक हो, टेम्परेचर, सपोज टेम्परेचर इज नॉट मेंशन, सपोज टेम्परेचर नॉट मेंशन, आपका टेम्परेचर मेंशन ही नहीं है. ओके, तो ऑर्गेनिक बेस ऑलवेज प्रेफर thermodynamically controlled product. That means more substituted. Okay, and inorganic base prefer kinetically controlled product. That means less substituted product. Okay, and remember there, अगर प्रेफरेंस हो तो टेम्परेचर का प्रेफरेंस आपका बेस से ज़्यादा होता है. टेम्परेचर का प्रेफरेंस दैट शुड बी ग्रेटर देन बेस. ओके, नेक्स्ट. ओके, क्लियर? ओके, नेक्स्ट. So there must be the symmetrical ketone can be there, base can be introduced, NaOH, ethanol. क्या प्रोड्यूस होगा बोलो? Guess. There should be enolate anion can be produced. ऐसे होता है. कैसे रिएक्शन होगा? आपका O नेगेटिव होगा, ऐसे होगा, ये बॉन्ड ऐसे होगा, फिर से वो रिएक्शन करेगा. सपोज ऐसा एक, इसके बाद जो दिन मैं कराऊंगा ना, वहाँ पर मैंने क्वेश्चन लेकर बैठूंगा. ठीक है, याद रखना. तो एक OH बाहर आ जाएगा. क्या प्रोड्यूस होगा? 1,2 CO2 ET. ओके, ET है, ET होगा. ओके, उसके बाद फिर से आप दे दो NaOH, इथानॉल. क्या प्रोड्यूस होगा? एक नेगेटिव चार्ज होगा, दूसरा CO2 ET होगा. ओके, क्लियर? उसके बाद MEI बाहर आ जाएगा. ओके, CO2 ET. ओके, अगेन HCl use or lithium chloride use. Why? Because this CO2 ET convert into COOH. Again DME heat can be used and CO2 that should be released. CO2 रिलीज होने के बाद क्या होता है? डिकार्बोक्सिलेशन हो जाता है. डिकार्बोक्सिलेशन के बाद यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज होता है, वो हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद क्या होता है? यहाँ पर डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पर एक मिथाइल होता है. बस, दैट्स इट. ओके, यहाँ से प्रोड्यूस होता है. ठीक है, क्लियर? तो अप टू दिस आज हम इतना ही किया. उसके बाद से मैंने इनोलेट केमिस्ट्री से अच्छा खासा क्वेश्चन रेडी करूँगा. ठीक है, तो उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे. ओके, थैंक यू सो मच. So thank you, and please subscribe my channel Upper Chemistry in YouTube and Upper Chemistry in Facebook group. दो groups have Upper Chemistry, you can see, and Apurupa Guha as a education consultant Facebook है, and also Upper Chemistry Thread and Upper Chemistry Instagram. Okay, thank you.